बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज का जो हमारा लेसन है इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज 1.3। यानी आज हम उन तमाम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो अभी हमने पिछले लेसन्स में की हैं और उन तमाम एसएलओस का एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू भी लेंगे कि क्या आपने इन क्वेश्चंस को सही तरह से अटेम्प्ट किया या नहीं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप मेरे साथ इन आंसर्स को मैच कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इनको अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरे साथ अभी इस वक्त रन टाइम पे इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें। तो आज की एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 1.3, जिसमें हमने कंपैरिजन की एक्टिविटी को डिस्कस किया था। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। Question 1 is, compare the following groups of objects and write less than and more than in the space provided. Now always remember, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें and see what are you expected to do. एक काम इसमें आपने कंपैरिजन का करना है और your other task is to write. So now when you know what to do, you are able to answer the questions properly and with less chances of making a mistake. और आपने लिखना क्या है, less than और more than का जो word हमने vocabulary word सीखा था, we are going to put it here in the given space. So let's count with me. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So when 3 comes first and 4 comes afterwards, तो मैंने आपको क्या बताया था, we read from left to right in mathematics. So we go, this is a number lesser than the other number. So we will write here in 4 lines less than. Shabash, आप भी लिख लीजिए. Now we look at part B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8 books. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 books. Now this time we have 8 first and then we have 5. And we know that 8 is more than 5. Shabash, तो हम lines पे लिखेंगे more than. Now let's look at question number 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dolls. Now tell me which numbers are bigger. Yes, 10 is bigger than 6. And 6 is before, so we will write here the word less than. Well done. Almost there. अब last वाला बताइए. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Less than. Shabash. Now let's look at question number 2. Compare and write the following numbers less than or more than in the blanks. Again, you have to compare first and then write. So do with me please. A में कौन से numbers हैं? 23 and 18. So what will be the right word to write here? More than. Shabash. More than, because 23 is more than. Part B में देखिए 17 and 19. So 17 is less than. Wonderful. Let's move on to the next part. 36 is more than 22. अब आप जल्दी जल्दी भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ आ गई है कॉन्सेप्ट की. 42 is more than 30. So I hope you're quickly writing it with me as well. 49 is more than 40. You have to compare the numbers. Good. Last one is 39 and then 53. So 39, जब इनको decompose करें तो 3 tens हैं यहाँ पे और यहाँ पे 5 tens हैं. So automatically 39 is less than 53. Question number 3. Match the objects having 1-to-1 correspondence. आपका टास्क है यहाँ पे एक टास्क मैच करना, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप ऑब्जर्व करें. यू ऑल्सो नीड टू ऑब्जर्व कि क्या आपको दिया गया है. These are rabbits and these are carrots. Rabbits like carrots, तो इस वजह से ये हमने
कनेक्शन एस्टेब्लिश किया यानी कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट की। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। दीज आर hen। hen का लिंक किससे है? फ्लावर से, एग से कि केज से? जी हाँ, एग से। hen lays eggs। birds। birds का किससे कनेक्शन है? केजेस से या फ्लावर्स से? केजेस से। वैसे हमें बर्ड्स को केज में नहीं रखना चाहिए, दे शुड लिव फ्रीली इन द नेचर। बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज आर कनेक्टेड विद फ्लावर्स बिकॉज ये फ्लावर्स में से नेक्टर लेके हमारे लिए हनी बनाती है। सो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सरसाइज 1.3 में तमाम की जाने वाली एक्टिविटीज का एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू किया है। टीचर्स, एक्सरसाइज में सिर्फ उतनी ही सजेस्टेड एक्टिविटी दी गई है जितनी रिक्वायर्ड थी, लेकिन इस लर्निंग को एक्सटेंड करना है आपने एज पर द नीड ऑफ योर क्लास एंड स्टूडेंट्स। अगला लेसन हमारा होगा इस कंप्लीट यूनिट के रिव्यू का, और उस रिव्यू में तमाम बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, हर क्वेश्चन का मेरे साथ आंसर शेयर करना है, ताकि हमारा जो ये चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो कंप्लीट हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।